एक गया तो दूसरा आया। पहले अदानी ग्रुप के पीछे हिंडनबर्ग पड़ा था, एक ही मकसद से कि अदानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर प्राइस गिर जाए, और वैसा हुआ भी। और अब लगता है बारी है मिस्टर अनिल अग्रवाल के वेदांता की। हुआ ये कि वेंसडे को वॉइसरॉय रिसर्च ग्रुप ने एक्स अकाउंट पर डजन से भी ज्यादा ट्वीट्स किए, ये बताने के लिए कि वेदांता लिमिटेड इज नथिंग बट अ पॉन्जी स्कीम। वो अपने ट्वीट की थ्रेड में कई सारे आरोप लगाते हैं अनिल अग्रवाल लेड वेदांता ग्रुप पर। वो बेसिकली कहते हैं कि वेदांता रिसोर्सेज, जो कि यूके बेस्ड पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, वो और कुछ नहीं बल्कि एक पैरासाइट है, यानी कि खून चूसने वाला कीड़ा। और ये जो पैरासाइट है, ये जो इंडिया में लिस्टेड वेदांता लिमिटेड है, इसका खून चूस रहा है। यही नहीं, उनकी 90 पेज की रिपोर्ट में वेदांता ग्रुप की कंपनीज पर कई सारे आरोप लगाए गए। फिर उसमें अकाउंटिंग मिस रिप्रेजेंटेशंस के आरोप हैं, एसेट वैल्यूज को जानबूझ के बढ़ा दिया गया है, अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज से पैसा निकाल के पेरेंट कंपनीज को भेजना, स्टॉक प्राइस में मैनिपुलेशन करना, मीडिया रिपोर्ट्स को पीआर टूल की तरह यूज करके शेयर प्राइस को ऊपर ले जाना। ये सारे आरोप वॉइसरॉय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप पर लगाए हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वेदांता ग्रुप जो है, ये कोई बिजनेस ग्रुप नहीं है बल्कि एक पॉन्जी स्कीम है। और आज जो भी एलिगेशंस लगे हैं उनके डिटेल में आज हम जाने वाले हैं। क्या आरोप है और क्या रियलिटी है, इसकी भी हम बात करेंगे विद ट्रांसपेरेंसी। एंड एट द सेम टाइम मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई समरी नहीं है उस रिपोर्ट की। यहाँ पर हम एक स्टेप आगे बढ़कर डायरेक्ट हम आपको वॉइसरॉय रिसर्च के फाउंडिंग मेंबर गैब्रियल और फ्रेजर, इन दोनों से हमने डिटेल में बात की, जहां पर हमने इस केस के बारे में डिटेल में उनसे समझा। साथ ही कुछ कठिन सवाल भी उनसे पूछ लिए कि क्या उन्होंने शॉर्ट पोजीशन पहले ही ले रखी है, अगर ले रखी है तो किस फॉर्मेट में, तो ये मामला क्या है। हमने पूरी बारीकी से उनके साथ डिटेल डिस्कशन किया। उसकी कुछ क्लिप्स आपको इस वीडियो में लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट के बस आखिरी कुछ दिन बाकी है। तो अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू सीखनी है, अंडर वैल्यूड अपॉर्चुनिटीज को पिक करने के बारे में और वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में डिटेल में सीखना है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इस कोहॉर्ट के डिटेल जानने के लिए नीचे दिया गया वो फॉर्म जरूर फिल करें, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है। उसके बाद हमारे सेशन की लिंक आपको मिल जाएगी। इस पूरी जो कंट्रोवर्सी है उसके सेंटर में दो कंपनीज, वैसे वॉइसरॉय रिसर्च ने बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज का भी नाम लिया है, लेकिन जो दो बड़ी कंपनीज है यहाँ पर वो है वेदांता लिमिटेड, जो कि एक इंडियन लिस्टेड कंपनी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनीज में से एक है। इस कंपनी का मार्केट कैप फिलहाल 1.7 लाख करोड़ के आसपास है। जैसे ही रिपोर्ट आई उसके बाद वेदांता की शेयर प्राइस 8% से गिरी थी, बाद में शेयर रिकवर होकर लगभग 3.5% पर डाउन में क्लोज हुआ। और जो दूसरी कंपनी है वो है यूके बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज। ये वेदांता लिमिटेड की पेरेंट कंपनी है, जिसके पास वेदांता लिमिटेड का 56% स्टेक है। ये जो वेदांता रिसोर्सेज है, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, ये लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर पहले लिस्टेड थी, लेकिन बाद में मिस्टर अनिल अग्रवाल ने इस कंपनी को मार्केट से डिलिस्ट कर लिया। इसके अलावा कई सारे और कंपनीज के नाम आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, भारत एल्यूमिनियम, सैबो पावर और बाकी कई सारी सब्सिडियरीज। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो वेदांता रिसोर्सेज है यूके बेस्ड, उस पर 86,000 करोड़ का डेट था, कर्जा था। अब कर्जा चुकाना पड़ेगा। अब देखिए कोई भी इंडियन कंपनी फॉरेन की उसकी पेरेंट कंपनी को आरबीआई के बिना परमिशन के डायरेक्ट फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो फिर दूसरे तरीके कौन से हैं? तो डिविडेंड हो गया कि आप डिविडेंड बांटो, तो जिसके पास मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है उससे सबसे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वॉइसरॉय रिसर्च बड़ी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, तो ये एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऑलरेडी पहले भी कई सारे लोगों को पता थी। वो ये थी कि अगर आप वेदांता लिमिटेड के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो पिछले 5 सालों में उन्हें जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो क्लोज टू 80,000 करोड़ का हुआ है। लेकिन इन्होंने जो डिविडेंड बांटा है पिछले 5 सालों में, वो अमाउंट इस प्रॉफिट अमाउंट से ज़्यादा है। मतलब प्रॉफिट है आपका 80,000 करोड़ का, आपने डिविडेंड बांटा है 1,10,000 करोड़ का। तो ऑफकोर्स सवाल ये आएगा कि कंपनी अपनी एक्सपांशन में एक तो इन्वेस्ट नहीं कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये ऊपर के 30,000 करोड़ कहाँ से आए? तो वॉइसरॉय का कहना है कि ये अमाउंट कंपनी कर्जे लेकर ले रही है और कर्जा लेकर डिविडेंड बांट रही है, ताकि उसकी पेरेंट कंपनी का जो कर्जा है वो कम हो जाए। अब इसी चीज़ के चलते जो वेदांता लिमिटेड इंडियन कंपनी का जो कर्जा था, जो अराउंड 57,000 करोड़ का था, वो अभी 90,000 करोड़ पार कर चुका है। यानी इनकी साल का जो इंटरेस्ट निकल कर आ रहा है वेदांता लिमिटेड का, वो अभी 10,000 करोड़ के आसपास चला गया है। तो वॉइसरॉय का कहना है ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन लूप है। तो वॉइसरॉय का यहाँ पर ये कहना है कि अगर ये चीज़ लगातार जारी रही तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि कंपनी इस कर्जे को मैनेज नहीं कर पाएगी, और ऑलरेडी सारा का सारा पैसा आपका बाहर जा रहा है, बिजनेस में तो कुछ इन्वेस्ट हो नहीं रहा है। तो इनका कहना है कि बिजनेसेस में भी यहाँ पर एक ग्रोथ लिमिटेशंस आना स्टार्ट हुई है। अब दूसरा प्रॉब्लम वॉइसरॉय को ये है कि यहाँ पर डिविडेंड दे देकर इन्होंने जो कर्जा है पेरेंट कंपनी का वेदांता रिसोर्सेज का, वो कम तो किया है, लगभग आधा किया है। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट पहले 7% के आसपास था, ये जो कंपनी पे कर रही थी अपने कर्जे के लिए, वो भी इनके अनुसार 13-14% पर चला गया है, जिसकी वजह से डेट कम हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ हैं वो अभी भी जारी है। तो इसके बारे में कंक्लूजन में वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडियन लिस्टेड कंपनी है, जहाँ पर पब्लिक शेयर होल्डर्स का बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, उस कंपनी से पैसे निकाल कर
एक प्राइवेट कंपनी के जो कर्जे हैं वो कम किए जा रहे हैं, उसको हेल्प की जा रही है, और इसमें अगर कोई फंस रहा है तो उनके अनुसार वो है इंडिया का रिटेल इन्वेस्टर। यहाँ पर जो दूसरा मेन इशू वॉइस रॉय ने रेज किया है वो ये है कि ये जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, इसके पास वेदांता लिमिटेड के बहुत सारे शेयर्स हैं, और इन्हीं वेदांता लिमिटेड के शेयर्स इन्होंने गिरवी रख के बहुत सारा लोन लिया है। तो ऐसे में अगर वेदांता लिमिटेड की शेयर प्राइस गिर जाती है तो वेदांता रिसोर्सेज के लिए वो प्रॉब्लम हो जाएगा, और इसीलिए वेदांता लिमिटेड हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं। और एक स्ट्रैटेजी का उन्होंने नाम लिया है बेट एंड स्विच फंड रेजिंग। ये नाम मैंने भी पहली बार ही सुना, जहाँ पर उन्होंने लिखा है कि कंपनी बड़े जो ट्रेंडिंग सेक्टर्स है जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, इवन न्यूक्लियर पावर, इन जैसे अनाउंसमेंट्स करती कि हम यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं और बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, और इस तरह न्यूज़ में रह के वो लोगों से फंड रेज करते हैं, न्यूज़ में रह के वो शेयर प्राइस बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो चीज़ है इस पर अगर मैं सेबी का एक रेफरेंस दूँ तो करीब आज से 2-2.5 साल पहले वेदांता पर सेबी ने कुछ फाइन लगाया था, मुझे लगता है 30 लाख रुपीज़ का, इसलिए क्योंकि जो इनकी डील होने वाली थी वेदांता की विथ फॉक्सकॉन ग्रुप सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए, तो उसमें जो लिस्टेड वेदांता है उसका कोई लेना देना नहीं था। वेदांता ग्रुप की एक और कंपनी थी जो लिस्टेड नहीं थी, उसके साथ ये डील होने वाली थी, लेकिन फिर भी जो लेटर पैड है इस पर जो नाम था और जो स्टैम्प था वो वेदांता लिमिटेड का था, जिससे कई सारे जो इन्वेस्टर्स हैं सेबी के अकॉर्डिंग वो गुमराह हुए थे, एंड उसकी वजह से सेबी ने फिर इसका इन्वेस्टिगेशन किया और कुछ फाइन भी लगाया था। तो वॉइस रॉय का ये कहना है कि इस तरह की चीज़ें वेदांता ग्रुप करती है ताकि वो हमेशा न्यूज़ में बनी रहे और कंपनी की शेयर प्राइस अच्छी खासी बनी रहे। अब ये तो हो गए 2 मेन आरोप। इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे आरोप लगाए कि उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो गोल्ड को स्मगल करते, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन उसका कोई प्रूफ या डॉक्यूमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। साथ ही उन्होंने इनकी और भी जो सब्सिडरीज हैं उनको भी हाईलाइट किया है, जैसे कि ESL यानी इलेक्ट्रो स्टील्स। इस कंपनी को 2018 में बैंक्रप्सी कोर्ट से वेदांता ने खरीद लिया था। उस टाइम सबको ये लग रहा था कि ये एक बार्गेन डील है, लेकिन बाद में अभी अगर देखा जाए फाइनेंशियल और सारे किसी भी एंगल से तो ये एक अनदर हेडेक वेदांता ग्रुप के लिए तैयार हुआ है। साथ ही उन्होंने कुछ आरोप तो ऐसे लगाए कि कुछ सब्सिडरीज जिन्हें वेदांता ग्रुप ऑपरेशनल बता रहा है वो 6-6 महीने से बंद पड़ी हुई है। अब देखिए इसके साथ हमने और भी डिटेल उनके साथ डिस्कशन किया है, जिसे इसी वीडियो के आगे मैं कंटिन्यू में लगा रहा हूँ, जहाँ पर आप उनकी बातें सुन सकते हो कि क्या उनका ओपिनियन है, क्या डिटेल्स उन्होंने बताई है। लेकिन अगर कंक्लूजन में बात करें तो मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि बहुत सारी जो एलिगेशंस है ये एक्चुअली पहले भी पब्लिक डोमेन में थे, और जिस तरह का इनका डिविडेंड जा रहा है तो ऐसा नहीं कि वॉइस रॉय ने पहली बार इस पर प्रकाश डाला है। ऑलरेडी कई सारे जो रिसर्च कंपनीज हैं इंडिया के भी, उन्होंने भी इस जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसे रेज किया है, और ये चीज़ कुछ हद तक अगर फाइनेंशियली देखें तो है भी कि फिलहाल दैट ग्रुप इज़ पर्टिकुलरली फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द डेट। कर्जा जो उन्होंने लिया है उससे प्रॉब्लम्स तो हो रही है, लेकिन साथ में ये भी आपको देखना पड़ेगा कि यू कांट जस्ट रिलाई ऑन एनी रिसर्च रिपोर्ट। आपको जब हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि वन शुड डू देयर ओन रिपोर्ट। तो आप अपना रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लीजिए। डायरेक्टली कोई बता रहा है या कोई कंपनी बाहर कंट्री की है तो उनकी सुन के आप कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि इसमें कुछ एलिगेशंस है, उसमें उन्होंने पब्लिक डेटा का इस्तेमाल किया है, कुछ जगह पर उन्होंने अपने कुछ डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड किए, और कुछ जगह पर उनके पास कोई डेटा नहीं था उस चीज़ें बताने के लिए। तो ऐसे भी कई सारे एलिगेशंस हैं जो उन्होंने लगाए हैं जिसका कोई डेटा नहीं है, तो इसलिए हम भी उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पर एक चीज़ तो है कि जो लूप है इनका वो क्लियर है। बहुत सारे शेयर होल्डर्स इस कंपनी में इसलिए भी है क्योंकि कंपनी का डिविडेंड यील्ड 10% का है, यानी साल का FD से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको डिविडेंड यील्ड से मिल रहे हैं, और शेयर प्राइस ग्रोथ भी लास्ट कुछ ईयर में अच्छी खासी रही है। पिछले 1 साल में ये 3% से गिरी है, लेकिन उससे पहले के 3-5 साल में अच्छी खासी शेयर प्राइस भी बढ़ी है। दैट इज़ वाई पीपल आर इन। बट अभी एक अगर ये चीज़ सुधरी नहीं, अगर अभी भी लगातार डिविडेंड बहुत सारा जाता रहा यहाँ से आगे, तो फिर शेयर प्राइस पर भी उसका इम्पैक्ट शायद हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, सारे एंगल्स आप भी ज़रूर स्टडी कीजिए। एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है आपके लिए भी, रिसर्च करने के लिए एक अच्छी कंपनी है, तो उसे आप चेक कीजिए। बाकी जब वेदांता ग्रुप से पूछा गया कि आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि ये एक अटेम्प्ट है हम पर एक गलत तरीके से आरोप करके हमें डिफेंड वगैरह करने का, और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को जो पब्लिक डोमेन में है उसका इस्तेमाल करके इन्होंने चीज़ें बताई है। बाद में वी विल ऑल्सो ट्राई टू रीच आउट टू वेदांता ग्रुप्स मैनेजमेंट, उनके साइड से क्या एक आंसर आता है, क्या कुछ डिटेल्स आती हैं, वो भी अब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर पूरा कन्वर्सेशन सुन सकते हैं एक्चुअली इंग्लिश लैंग्वेज में, लेकिन हिंदी सबटाइटल्स और बाकी चीज़ें हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। और इसी तरह हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट के आखिरी कुछ दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन के, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद इस कोहॉर्ट के सारे डिटेल्स आपको एक सेशन के जरिए पता चल जाएगी। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। और चलिए बढ़ते हैं हमारी कन्वर्सेशन की तरफ। Thank you so much for coming here, Gabriel and Fraser. Sure. And the first question that I would like to ask is like, why did you pick Vedanta? Sure. Well, I think Vedanta has already, I mean, the Vedanta has apparently already been the talk of the town in India for some time. Um,
we saw Vedanta's debt instruments in the UK as being a potentially viable short. They were quite liquid, um, and they're US denominated. And generally speaking, when we're looking at shorting debt, we look at two things. We look at the ability of the company to be able to cover the interest payment, so debt coverage, and we look at the collateral of the debt and whether or not that's impaired, which would be the collectability of the principal. In this case, objectively, Vedanta Group does not make enough money to cover the interest service charges. And this is observable. Vedanta Resources as a consolidated group, so from top to bottom, including Vedanta Limited, does not generate enough cash to to pay dividends up the chain that are very expensive because of the structure with non-controlling interests from Hindustan Zinc and from Vedanta Limited, Yeah. to then be able to cover the interest payments at Vedanta Resources. Now, it is the way that there is some sort of misconception in the market that Vedanta is going through a brilliant sort of debt trimming strategy, which is completely false. The net debt in the Vedanta consolidated group has decreased somewhat, but that is at a gross level. At a net level, if we take into account the amount of assets that Vedanta has liquidated, the amount of liquid assets that it has drained from its reserves, the amount of working capital management it has taken to sort of to create some sort of liquidity in its current assets, we actually see that this debt has increased, pretty substantially, maybe tapered off a bit with some dilutive capital raises at the equity level. And the cost of debt has increased, almost twofold. So from a viewpoint of why we selected Vedanta, firstly, it looked like people already understood that this was a struggling entity. Fair enough, it's junk rated debt. But there seemed to be, when we started picking beneath the surface of this preconception that this business was struggling, we found this sort of very loose belief that, okay, these guys seem to be engaging in a pretty, inspiring turnaround. And just scraping through that surface, we found that that was very not true. Okay. So one thing, that is interesting, quite interesting about this report is the timing. Vedanta is Yep. planning for the demerger, and September month, timeline has been given to them. So Yeah. that is one thing, and another thing is that the date restructuring that you are talking about. I mean, it has been happening since quite a long time. I mean, if you look at Sure. last 5 years financial reports, you will see the similar pattern. So why this report now? I mean, even though I think many people also do know that this has been happening in the company. So what's special about the current timing? There's nothing special about the current timing. I think every time we put a report out, someone asks us, why did you do it now? Literally, we tried to get this out as quickly as we could Okay. after we got the 2025 financial report. This thing we have been working on for months. If we could have gotten it out before the FY 2025 results, we would have. We decided to wait because we wanted to see, a lot of the research we're conducting depends on, I guess, the quick availability of this news. If we're writing this report and we put it out a month ago and it didn't have FY 25 results, it would probably be redundant, or we would have to repeat the entire exercise to show that actually it's still valid after 25. But Um, also in line with that, the full year 2025 came in and confirmed our thesis. Yeah, you can't just write something up and not yeah, test yourself. People seem to think that it's a propaganda, as we're using propaganda techniques or whatever it is, and malice. We're just using company data. yeah. And the difference between us and them is we spend months trawling over data, testing ourselves, and importantly, assuming we're wrong. And it's only when we get to a stage where it's starting to stack up do we start to believe ourselves. Yeah. And And go on, Gabe. oh no, so I was just going to address, as far as the question that relates to, uh, I believe the question is intended to mean why did we do it essentially not 2 years ago? Because you have Yeah. seen some sort of superficial improvement with the results.
That's not our belief at all. We believe that the Vedanta group is significantly worse off now than it was 3 years ago. And I'll run you through some stats, and I can send these through to you later. Maybe you can put them or overlay on the video if you'd like. Yeah, sure. We looked at Vedanta's financials in three different ways. We looked at it as a consolidated group, we looked at it as a propco, and we looked at it as Vedanta Limited, the operating entities, right? The Vedanta Limited consolidated group, the net debt has increased over the last 5 years, Yeah, and it sits at the same rate now, say $13 billion as it did last year, if you exclude the $1 billion raised by management, which was dilutive equity raise. yeah, At the same time, the gross cash has been severely depleted. Your working capital has been, managed to essentially liquidate those short-term assets, and the effective interest cost on your gross interest-bearing liabilities has increased from 7.6% in 2021 to 14% in 2025. Okay, so that's almost double. yeah, And it's not fair. It's not fair to say, okay, well, this company's managing its debt because it's these debts somehow reducing because we're selling stakes in our business and we're liquidating assets to pay down minutia of debt, of gross debt. It's not fair to say that while your interest costs double. So yes, you can replace your debt with a slightly, and I'll say slightly less amount of debt. On a net basis, against your cash, you have a greater net debt position, and the effective interest cost has increased by 2x. So I'm not sure, again, this is the question we've asked. The real propaganda in our eyes is that Vedanta is engaging in a rehabilitation strategy to refi this debt in a manner that's more sustainable. And every sense of the way that we look at it, that's not the case. So if we move on to the Vedanta Limited, which is the principal collateral for this debt, Vedanta Limited's net debt has increased from, this is after working capital adjustments, has increased in our book from 3.7 billion in 2021 to 9.9 billion in 25, yeah, right? The gross debt has increased by only $1 billion. The net debt has increased by 3x, by $6 billion. right. Again, the interest expenses have gone from, roughly 7% to 13%. Yeah, And you have more than doubled your interest costs, and all of the cash that's being raised, your free cash flow margins are slimmer. All the cash that's being raised is used to pay dividends, but the dividends exceed the value of the free cash flow by an enormous amount. yeah, Vedanta Limited has paid about $8 billion of dividends in the last 3 years. They've incurred a $5.6 billion shortfall over $8 billion of dividends paid, which has been made up with debt. And the unusual consequence of paying such a high dividend at Vedanta Limited, right? And there's absolutely no question that the reason that these dividends are paid and that the quantum of dividend paid exceeds the affordability of the dividend because Vedanta Resources has debt that it can't afford. The only cash generating asset Vedanta Resources has to pay or to service that debt is its stake in Vedanta Limited. The unusual consequence of that dividend being so high is that it has floated the stock price of Vedanta Limited yeah, quite significantly. And the benefit of that to Vedanta Resources is that the collateral the collateral for the debt that they hold is the stock. yeah, So not only will them being able to not afford to pay the interest and not afford to pay these dividends continuously impact the debt coverage, suddenly if you've cut the dividend of the stock price tumbles as well, and that's also the collateral. It's a So complete circle. But on and the and on the that's flip side, that's where we believe this is Ponzi-esque in nature. You're borrowing money, which is basically a subordinated loan at this point. You're borrowing money at your subsidiary, right? And you send that money upwards to pay your old investors at the owner, and the owner's principal secured against the equity of the subsidiary, which is being highly indebted and now cannot afford really to take on more debt. interesting. So if I could summarize what you explained is like the first thing is like the dividends that are being paid out. So they are greater than the cash generated from operating activities. And that is why Correct. you are saying that they are being paid from the date that company is Correct. acquiring. And at the same time, the date cost is doubling. In the last 5 years, it has Yes. doubled.
And second thing that is quite interesting that you said is like, Vedanta Resources has, the collateral, they have also raised the, capital from the banks Yeah, in the form of debt. And the collateral for that loan is Vedanta Limited stocks. So that is why yeah, company can't afford to, correct. loosen up the Well, share price. Yeah. and that's I think that's also another big misconception about what we're trying to do here is we are not against the we are actually very against the pillaging of Vedanta Limited. We think that Vedanta Limited is being run by a kleptocratic management that is systematically looting the assets of Vedanta Limited for their only benefit exclusively. It is not in the interest of the shareholders of Vedanta Limited that they continue to do this, and it's not in the interest of the creditors of Vedanta Resources, whose collateral is the Vedanta Limited stock, to allow them to keep stealing from this business. And I think that's straightforward. We're not, the best outcome for them is to get management out at this point. So, one very important question that India's retail investors are asking. I mean, yesterday we asked some of our subscribers, do you have anything to ask? So, the most liked Yep. question was, has Viceroy taken any short position in Vedanta? In Vedanta Not yet. Limited, no. Our fight is to preserve the value of Vedanta Limited. That Okay. that is, I mean, fundamentally, what we have written is that the best outcome for Vedanta Limited and for Vedanta Resources shareholders is to preserve Vedanta Limited. And the only way to do that at the moment is to stop the rampant looting of Vedanta Limited for the exclusive benefit of its majority shareholder. We are not short Vedanta Limited. So, this is leading me to the another question. Like, Mhm. you have come up with a research. You did like scuttlebutt approach as well. Visiting, their subsidiaries, understanding the on-ground position, and it Yeah, takes a lot of time. Need lots of money. So, my question is, what is your monetary benefit from this particular report, and generally, how do you make money overall from research point of view? sure. We're short the debt of Vedanta Resources. We're Acha. short the owners of the owners of Vedanta essentially. Okay, okay, Um, and by the way, this what we are short a company that's taking money away from India, and that's the Indian taxpayer, that is the Indian shareholders to the UK. okay. So this is a very we are. I'm not going to pretend to be a some sort of stock evangelist, but we want to preserve the value of Vedanta in India. Okay, okay, okay. So you have taken some sort of short position. Yeah. Yes, but in the shareholding company, we're taking a short position of Vedanta Resources being the parent company of Vedanta Limited. Okay, okay. In Vedanta Resources, not in Vedanta Limited. Correct. Okay, okay. Understood. So, I mean, this is again leading me to ask you another question. Like Vedanta Limited is listed, Vedanta Resources isn't. So, like, how Yes. do you short in that? Because In that their case? debt, their Yeah. debt's tradable Okay, in Correct. US denominated. Yeah. And It's a it, it's a bond short, not a stock short. okay, yeah. okay, okay. Perfect. So now I have this question from the Indian retail investors. So like few months back, almost a year back, Hindenburg happened. So they put some allegations on the Adani group. Then SEBI report, SEBI started the investigation, and the report came out like SEBI didn't find anything very serious there. So that is why people have started the activist research companies like Hindenburg, like yours. So, what one thing that you would like to, tell the shareholders of Vedanta and retail investors of India? I would say to not base. I mean, this is not an isolated incident with Sevi and Hindenburg. After we published Wirecard, or Fraser published Wirecard, the immediate reaction of the German regulator was to persecute us. Ah, Um, I would, and everyone knows how that turned out. Uh, I would say that, we don't rely on other analysts to conduct our research. We don't rely on credit agencies to conduct our research, and we don't rely on the regulators to accurately conduct their research. And that's not an insult. We know that, especially
more so now that these regulators have a hard job, that they're unfortunately underfunded, and we do the best we can to kind of lay out what we think on a civil platter, and we engage with them and we give them the information that we have, and we're always happy to help. All right. We've also got within our submissions that we're doing to SEBI, there's an opportunity here for the regulators and the government to actually improve the confidence in the market by taking the appropriate action. It's quite clear that things don't stack up how management have said. One of the Their largest conduct, investors in Vedanta Limited's biggest assets is the Indian government. We have quite concisely detailed how they're being looted, like they're being robbed. How? Um, well, I mean, the Hindustan Zinc and Balco are both, quite heavily owned by the Indian government. Okay. If you start looting those businesses and paying brand fees out of those businesses that are just disproportionate, have no, commercial reasoning behind them, and then laden those businesses up with debt and try to move that debt in as dividends upwards as one-time sort of grifts. Uh, it's not really in the interest of the other shareholders to do that. Your strategies are misaligned. The strategy for the shareholder is to reinvest some of the free cash flow into those expansion projects that have been Yeah. announced years ago that have been constantly delayed, right? That's the future of the dividend. Now is taking on more debt to pay a bigger dividend now is short-termism that doesn't last. Uh, So you do also you? have instances where, obviously those events happened. You also have instances where Vedanta straight up tried to defraud the Indian government by selling Hindustan Zinc and Balco crap businesses. You have ESL Steel, which this is what we've discussed earlier. Is they Vedanta tried to sell ESL Steel to, I think, HZL at one point for a 3x valuation, and the government had to intervene as a minority shareholder to stop that transaction. Okay. Obviously, that transaction it's ridiculous. It's a total fraud. but Um, if you think about it from another perspective, so believe your own eyes, not your ears, is a really good phrase. Yeah. Go away and have a look at how many liability related announcements Vedanta has announced over the past 3 years. It's 107. Yeah, versus its peers that's 15, things like that. And the way that their disregard for compliance of regulation is insane. It's insulting to their own investors. these guys have by far the most active disputes with the Indian tax authorities than we have seen any company have with any tax authorities anywhere. It's over $2 billion of Hindustan Zinc statutory dues are in dispute, um, since the early 2000s. And it's 3.5 billion Yeah, from memory in total liabilities that seem to be put down. We're fighting it, so we don't have to make a provision for it. yeah. And the reality is they're just extending and pretending, and it's all coming to a head. And in the You back can't. end, and in the back end of this as well, like the government knows that this, well, I mean, we presume the government knows that this is not, this Hindustan Zinc is also overvalued, given that they're trying to actively exit the stock. So I was listening to what Vedanta management had to say on the matter. They said that we were not involved by the Viceroy research, while the investigation, and they said all the things that have been said in the report are untrue. What do you say on this? Yes. Well, if they're all untrue, they should be pretty easy to disprove. Um, we haven't heard anything from them, and we haven't seen them even attempt to disprove any of our reports. We don't engage with management before the reports because all this information should be public. We shouldn't depend on fireside chats like every other analyst that is probably speaking to management. Um, because we had no burning questions. I think everything we found was pretty straightforward. Um, we don't see the reason of Prasad, engaging with management beforehand. Okay. you've got this issue where within their statement, if you just look at their statement,
right? The first is that they try and dismiss it with, and this is common, it's all in the public domain. So is that an admission that we're right? But amazingly, if it's all in the public domain, it's taken us months of delving into all the subsidiaries, right? So it's all in the public domain, which means we aren't using inside information. That's a plus. At least you know that we're complying with the law. But on the second part, as I said earlier, this is a propaganda. People using and flinging around this propaganda and malice, all the statements or the figures are their own. And it's illogical to think that management can dismiss in a childish manner a very detailed report where people have come back to us and said, we never knew this. A complete contradiction to what management is saying. We do tend to thoroughly reference every single one of our findings as well. Okay. And okay. yeah. Yeah, and what would be your message to the management of Vedanta? Well, we've Resign? asked that. We've actually just published a list of questions today. I can send you the link to it if you'd like. Yeah, sure. That's our comments. If they've asked for us to engage with them, there you go. There's our questions. Okay. Take a basic accounting course. I don't know. maybe we can sell management a course in financial, prudence. How to manage your debt. Yeah, that would be interesting. Stop with the gun. Yeah. Yeah, I'm available for a CFO role. If given opportunity to have one-on-one discussion with the Vedanta management, will you be open for that opportunity? Yeah. Sure. Okay. Oh yeah. Interesting. So we'll We see. can do it right here in London. Where all the cash goes. Yeah, exactly. I will for sure, because we are into particularly long-term thing. I mean, and for long-term thing, the main problem, not just in India but worldwide, that is happening is like accounting, engineering. Yeah. For sure. The number of cases have increased multifold in the last few years, and it is very, very important for a newbie investor to understand the financial details. I agree. And analytical stuff, so that they could start the next research firm just like Viceroy. Yeah. Well, if you think about this, Prasad, the financial engineering is the biggest risk to investors, whether in India right or not. And even just having a basic understanding of free cash flow versus the dividends that are paid will make you realize the reason it's high is generally it's not because it's a good company. You're subscribing a significant risk without realizing in collecting that dividend. Sometimes lower dividends are better for a business. It's more sustainable and it helps it grow. That is the contrary to where Vedanta is today. Got it. I mean, interesting. Nice to know. So thank you so much for your time, Fraser and Gabby. It was nice catching you up, and looking forward to many more conversations future like this. और इसी तरह हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट के आखिरी कुछ दिन बाकी है रजिस्ट्रेशन के, उसके बारे में डिटेल में जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल कीजिए, जिसके बाद इस कोहॉर्ट के सारे डिटेल्स आपको एक सेशन के जरिए पता चल जाएगी. सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी.